TLS Sushili says. Akshay, Mansi, Rajendra. Namaste, everybody. Namaste, Naren, Narayan, Poonam, Sandeep, Rishi. Love you. Love you for your greetings, everybody. Vivek, Manisha, Nitin, Sonal. Wow, wow. Lovely to see all of you. Lovely to see all of you. हाँ जी, चलो बहुत दिन हो गए मैंने एक सवाल नहीं पूछा. चलो before I start the happy minds for today, let me ask this question which we have not asked for a good long time. Hmm? हाँ जी, तो क्वेश्चन मेरा सिंपल है. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज हाउ यू ऑल दिस वेरी मॉर्निंग. कैसे हो आप लोग? लेट मी लिसन टू लेट मी रीड सम फैंटास्टिक आंसर्स. तो अच्छा करने से पहले टकाटक. नमस्ते शेबल. केदार इज ग्रेट. ओम प्रकाश इज हमारा छोड़ो सर, आप बताओ. हमारी तो जो लगी लगी है. आप बताइए आपका क्या हाल है? आई एम ऑन टॉप ऑफ द मून. झकास, अद्भुत, मस्त. शाबाश. That's fantastic. Awesome. Fantastic. लय भारी. आई कड़क. Fantastic. बड़ा जरूरी है ये this flavor and this feeling to be there, that you ask yourself, whether before people ask you how are you ask yourself how am I doing, how am I feeling. And if the answer is not very positive, then you got to ask yourself, what do I do to come back to that feeling of greatness, to that feeling of liveliness, to the feeling of awesomeness, जो भी feeling आपको चाहिए. And there are times when you are down, there are times when you're not okay, but the world doesn't care about how you're feeling. The world wants our best. So बड़ा जरूरी है कि हम जितना हो सके अपने बेस्ट को लेके जाएं. And so before you move out of your home, before you enter your office, you got to ask yourself, आपको पूछना चाहिए अपने आप से, how am I feeling? And if the feeling is not on the positive side, then I think थोड़ा सा ब्रेक लेके पूछो अपने आप से, what do you do? So what can I do to make it positive? Because किसी भी सिचुएशन में जहां पर आपको इम्पैक्ट लाना है, कहीं भी सिचुएशन में जहां पर आपको कोई डिफरेंस क्रिएट करना है, जो हम लोग जाते हैं घर से बाहर निकलते हैं टू मेक अ डिफरेंस, टू मेक एन इम्पैक्ट. तो फिर उस सिचुएशन में देयर इज नो अदर वे to make an impact other than be positive, right? So the approach has to be from the positive side. So before you, आप देखते हो ना शीशे में अपने आप को, और हम पूछते हैं अपने आप को कि how am I looking. So along with this question of how am I looking, you should also ask how am I feeling. So TLS मंगेश क्या बोल रहे हैं? At helm of self affairs. चलो ठीक है, great. खनखनित. That's nice. So बहुत last almost 27 years of me being in this human dynamics field, and इतने हजारों लाखों लोग मिले हैं, and I'm blessed that they we crossed our paths and then we could meet each other. But there's so many who have been a part of Life 360, जो हमारा flagship program है on the life side. तो उसमें जितने भी लोग आए हैं, इनफैक्ट नॉट ओनली लाइफ 360, बट चाहे वो अरस समझती हो, चाहे वो गेम ऑफ बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी इंटरवेंशन हो मेरा, तो एक चीज तो सब लेके गए हैं वापस के. Whenever they are asked this question, how are you? So nobody says fine. Nobody says okay. Nobody says कट रही है यार. Nobody says बैंड बजी हुई है. Nobody says बस जी रहे हैं. You know, and not that people are gung ho. Not that people are doing awesomely well. कभी downfall होता है, कभी अपने हिसाब से चीजें होती है, कभी नहीं होती. But then their way of accepting is very different. जैसे जितनी भी लगी हो, जितनी भी बजी हो, but I am feeling great, right? Because that's the only way I can fight back. That's the only way I can bounce back. So this flavor which I get whenever I meet any Chrysalian, whenever I meet anybody who's been a part of my program. अच्छा, जो लोग हमारे प्रोग्राम्स करते हैं, उनको हम लोग प्यार मोहब्बत से हम अपनी फैमिली में इनवाइट करते हैं, और उनको हम बोलते हैं Chrysalians. So they all take pride in they being a part of this family, and I feel so awesome about it that ऐसे हजारों Chrysalians हैं. So whenever I bump into them or they bump into me, कभी एयरपोर्ट में, कभी ट्रैवल में, कभी होटल में, and normally first question तो ये होता है, भाई कैसे हो? तो वो पूछते हैं how are you sir, and I will ask them how are you. And कभी ऐसा नहीं हुआ कि जहां मैंने ऐसा सुना हो सामने से कि कोई बोल रहा है सर कट रही है जिंदगी. They, no matter what's happening in their lives, they smile and they bounce back and then they say, sir, awesome.
फैंटास्टिक, फैबुलस, जबरदस्त, मस्त, अद्भुत, यू नो, बड़े कड़क, जो भी आप लिखते हो ऐसे ऐसे सुनने को मिलता है, एंड दैट काइंड ऑफ pumps you up, that kind of lifts you up. All those who have joined me on YouTube, namaste everybody on YouTube, and welcome to this week's Happy Minds. This is Happy Minds number 1186. So welcome to this week's Happy Minds. So I was just sharing about कि आपको कोई मिलता है तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका जो जाता है वो आपके कम्युनिकेशन से जाता है, अपार्ट फ्रॉम द वे यू ड्रेस, अपार्ट फ्रॉम द वे यू लुक, वो सब चीज है, लेकिन आपका फर्स्ट सेंटेंस kind of stamps the impression on the person's mind, and you never get a second chance to make the first impression. फर्स्ट इंप्रेशन तो फर्स्ट टाइम से ही बनता है, तो आप क्या बोलते हो? और नॉर्मली एक कॉन्वर्सेशन में लोग एक दूसरे को जब मिलते हैं तो पहला सवाल नॉर्मली ये होता है कि भाई हाउ आर यू, राइट? एंड तो उसमें आप क्या बोलते हो? तो आई थिंक यू शुड हैव वन फीलिंग, वन फ्लेवर रेडी ऑफ योर्स, दिस इज व्हाट आई फील, एंड जेन्युइनली अगर आप वो बोलोगे तो आप देखोगे कि you will uplift yourself by the way you communicate, because what we speak is what we think, and what we think is what we feel, and what we feel is the gateway to making us do many things. This simple chronology. हम जो बोलते हैं हम वो सोचते हैं, जो हम सोचते हैं वो हम फील करते हैं, जितना हम ज्यादा सोचते हैं जिस चीज को वैसा फील करना चालू कर जाते हैं। आई एम लाउजी, आई एम डल, आई कांट डू एनीथिंग, मेरे से कोई अच्छा काम नहीं होता है, नथिंग इज हैपनिंग, नथिंग इज वर्किंग। आप ऐसा बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, यू विल एंड अप क्रिएटिंग अ फीलिंग of depression, of negativity, of lousiness, of incapability. आप ऐसी feeling create करते रहोगे. But if on the other side, if you keep on talking to yourself on a positive side, and this is scientifically proven, कोई मैं नई बात नहीं कर रहा हूँ, कोई out of the world बात नहीं कर रहा हूँ, it's a simple proven fact. So the question is what we keep on talking to ourselves. So इसलिए आज के स्टार्टिंग के मेडिटेशन में मैंने यही बोला कि आप अपने आप से क्या डायलॉग बोल रहे हो, आप अपने आप से क्या कॉन्वर्सेशन कर रहे हो। जो दुनिया हमसे कॉन्वर्सेशन कर रही है वो तो अलग बात है, उसका भी हम पे इम्पैक्ट होता है, बट हमारा खुद से क्या कॉन्वर्सेशन हो रहा है उसका दुनिया के मुकाबले 10 गुना ज्यादा इम्पैक्ट होता है। सो व्हाट वी कीप ऑन टॉकिंग टू आवरसेल्व्स एज अ सेल्फ टॉक, हम बैठे हैं सोच रहे हैं, तो सोचना मतलब है टॉकिंग टू योरसेल्फ। सो व्हाट आर यू टॉकिंग टू योरसेल्फ? हाउ गुड यू आर, और हाउ लाउजी यू आर, हाउ वंडरफुल यू आर, हाउ केपेबल यू आर, और हाउ इनकेपेबल यू आर। क्या हम बातें कर रहे हैं? और जैसे हम खुद से बातें करते हैं तो जैसे वो बार बार हमें बोलता है यार यू आर गुड फॉर नथिंग, राइट? तो आपको बुरा लगता है। इन सेम में जब आप अपने बारे में बोलते हो खुद को कि यार मेरे से ये काम नहीं होता, मैं काम कर ही नहीं पा रहा हूँ ये, तो आप जितना बाहर वाला बोलता है कि आप किसी काम के नहीं हो तो आपको बुरा लगता है, अगर आपने वही डायलॉग खुद को बोला तो उसका 10 गुना बुरा लगने की पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है, बिकॉज आवर ओन वर्ड्स मीन अ लॉट टू अस। सो हाँ जी, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। हाँ ठीक है। हाँ, तो क्या लिखा था वो, बाकी सब फर्स्ट क्लास इंस्टॉल, बस चल रहा है, बाकी सब यस एब्सोल्युटली, बाकी सब बालकनी है, बाकी सब बढ़िया है। चलो ग्रेट, lovely to see all of you, and we have somebody has raised his hand. Rishi, you have raised your hand. You want me to have the mic on? Yes, if you want to share something, you can have a mic on. If you have, आपने गलती से हाथ खड़ा किया तो फिर आप उसको हाथ नीचे कर लो. But if you want to share, you got 10 seconds, Rishi. Otherwise, you can put your hand down, and your time ends now. Okay, ठीक है. Yeah. Deepa, you have your Rishi, तो you have a mic on, बेटा. Rishi, you have a mic on. हाँ, तो आप अपना अनम्यूट करो अपने माइक को. हाँ, जल्दी करो समथिंग. उमाकांत बीच में कहाँ से? सबको बहुत प्यार भरा नमस्कार. आई शाबाश. ऋषि, यू हैव टू, बेटा यू हैव टू डू समथिंग. ओके, आई एम कमिंग टू दीपा. दीपा, योर माइक इज, आपका हमने यहाँ से वो किया हुआ है. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ फ्रॉम योर साइड. हाँ नमस्ते सर, जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम. नमस्ते दीपा. नमस्ते। आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग। मुझे हाँ ये जी. बताना था कि जैसे हम सेल्फ टॉक के बारे में बात कर रहे थे ना, तो हाँ द वन थिंग दैट आई लव अबाउट वन ऑफ आवर सेंट्स,
is that he has written an entire एक अच्छी सी आरती लिखी हुई है जो कि आत्माराम की आरती बोलते हैं. ओके. सो मुझे नहीं लगता और किसी संत ने ये लिखा हुआ है. दैट इज द आरती दैट वी सिंग एवरी डे. सो Great. इट इज अबाउट, या, सो इट इज अबाउट द सेल्फ कॉन्फिडेंस जो अपने अंदर जो राम है उनको ग्लोरीफाई करने में, उनको उनके बारे में बात करने में बहुत अच्छा लगता है. Hmm. एंड इट गिव्स द फीलिंग कि जो राम मुझ में है वही राम आप में है, वही राम सब में है. सो इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ वननेस विथ Hmm. एवरीबody. Great, great. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. Thank you for sharing, Deepa. Thank you. God bless. थैंक यू And सर. uh, थैंक यू. this connection and this realization that the self-talk which we have, there are so many scriptures, there are so many hymns या भजन्स हैं जिसमें हम self-talk एक flavor ले सकते हैं उसका, and she's put it so beautifully there कि हम सब में राम है, and if you can just look into our own lives and you will see that there is so much goodness in each one of us, and if you can just arouse and bring that goodness to the forefront, so much can change. Thank you for that. Rishi, I'm putting you to you can yeah, share. या नमस्ते सर. Namaste, Rishi. Namaste. सर कंटिन्यूसली ट्रैवल में Hmm? जस्ट शेयर करना था कि आई यूज्ड टू, मतलब ऐसे गाना सिंग करने की आदत लग गई थी बीच में. हाँ. तो कभी कभी ड्राइवर है और कोई है तो ऐसे डरते थे कि क्यों करें. देन आपका फॉर्मूला याद आता है, हाँ. हु केयर्स. हम्म. तो हम्म. ये फॉर्मूला जो आपने एलएलपी में सिखाया 10 साल पहले सर, हम्म. बिकॉज ऑफ दैट अभी तक मेरे ख्याल से मेरे लाइफ में इतने सारे चेंजेस हुए हैं. आई डोंट हम्म. केयर अबाउट द वर्ल्ड एंड आई डू द थिंग्स जो मुझे लगता है. तो हम्म. आई बिलीव कि ये हु केयर सर आपने, मतलब ऑल आपने इतने सारे फॉर्मूलेज, इतने सारे थिंग्स बताए हैं, उसमें हम्म. हु केयर्स वर्क्स मी वेरी वेल फॉर मी. हम्म. वही मुझे शेयर करना था कि आई जस्ट थैंक यू सर. अरे वाह. God bless and happy that this is still working for you, and love you for sharing that, Rishi. Hmm? And what Rishi was sharing in the batch in Life 360, previously it was known as LLP and Life Leadership Program. Now it's called Life 360. A lot of things have changed in the program. So there is one concept which I have been speaking for years, and वो बहुत सा content change हुआ है, but ये एक subject है जो I love to share every HM, sorry, every batch, and the concept of who cares. So अभी मैं share नहीं करूँगा, batch में आओगे तभी मैं share करूँगा. But all those who have done the Life 360 batch, they understand the power and the whole aspect of who cares. But yes, of course, uh, we have to be also conscious about the world around us, that we don't do things which may hurt and harm the world around us. But बहुत से लोग जो है अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को अच्छे ढंग से जी नहीं पा रहे हैं, because we are so goddamn concerned about the world around us. लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, और उस चक्कर में हम लोग जो है बहुत सी चीज करने से रह जा रहे हैं. सिंपलेस्ट ऑफ थिंग्स वी आर नॉट डूइंग. फॉरगेट अबाउट द बिग थिंग्स. छोटी छोटी चीजें, जब जैसे ऋषि ने इतना कहा कि नाउ आई ट्रैवल, आई सिंग अ सॉन्ग. नाउ whether it's a taxi, whether it's I want to sing a song, and as long as other people in the cab, अगर if I'm traveling with some unknown guys, if they're not getting troubled, I will sing. But and if I'm alone and I want to sing, let the driver think what he wants to think. But I want to sing and I want to make this journey memorable for myself. तो कर रहा हूँ. अगर ड्राइवर को दिक्कत होगी, खुद बोलेगा सर बंद करो अभी, मेरे कान पक गए, थक गए आपके गाना सुन के, बेसुरा गाते हो आप. वो बोलेगा, उसका मुंह है, वो बोलेगा ना. जब तक वो नहीं बोलेगा मैं तो गा लूं. So that's how I think in many areas हम बहुत सी चीज करने से चूक जाते हैं, because we unnecessarily think about people and there's nobody thinking about us. Actually होता क्या है कि people are not thinking about us. We think that they're thinking about us. और मेरा हमेशा ये कहना होता है कि तुम हो कौन? तुम क्या बच्चन साहब हो? तुम क्या धोनी हो जो तुम्हारे बारे में सोचेंगे? एक तो कुछ हो नहीं, उसके ऊपर बैठे हो कि दुनिया क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में. अरे या तो पहले कुछ बन जाओ, फिर सोचो कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी. तो एनीवेज, वो सब्जेक्ट कभी और कभी लेंगे, मे बी, but that's a beautiful subject. So love you for sharing that, Rishi.
So those who have joined me for the first time and those who have joined in for just for a few times in Happy Minds. So normally we start with meditation. We start the Happy Minds. After meditation, we have a round of success story sharing. And then we have some sharing like this, which happened today. And then I share what I want to share. So आज का भी एक बड़ा अच्छा subject है on leadership. And that subject is also very close to my heart. I've shared about leadership on many Happy Minds, but हर बार कुछ अलग flavor है because मैं डिफरेंट हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो मैंने कभी पहले बात करी थी, तो मैं अलग हूँ, तो फिर सब्जेक्ट वही हो सकता है, लेकिन जो शेयर करूंगा उसका वेट, उसकी डेप्थ अलग होगी, बिकॉज आई हैव ग्रोन एंड आई हैव चेंज्ड, एंड दैट्स द वे इट इज फॉर एवरीबॉडी. और आपके लिए भी वो डिफरेंट होगा, बिकॉज आप वो नहीं हो. अगर आपने पहले भी सुना है तो आप वो नहीं हो जो आप पहले थे, तो आपकी समझ में भी काफी चेंज हुआ होगा. चलिए जी, क्या लिख रही हैं पूजा? Here comes the positivity. Currently just undergoing my vehicle failure, but listening with headphones just to come out in the good. Okay, ठीक है. But ऐसे failures होते रहेंगे पूजा in life, whether it be vehicle failures, whether it be relationship failures, whether it be business failures, and because we were not guaranteed any success when we were born, right? So we were not born, and nobody was given this guarantee. जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको गारंटी नहीं दी गई कि बेटा अभी तेरी जिंदगी में कभी फेलियर नहीं आएगा, अभी तेरी गाड़ी में कभी टायर पंचर नहीं होगा. Never, nobody was given this. Everybody was given this life, which is a combination of ups and downs, and that's what makes life so adventurous and so rewarding, because उसमें ups and downs है. And बट वो चैलेंज है कि हम रोमांच लेने के लिए, हम वो एक्सपीरियंस लेने के लिए वी गो टू थीम पार्क्स, फन पार्क्स, यू नो, एंड वहां पर हम बैठेंगे रोलर कोस्टर राइड में. लेकिन जिंदगी के रोलर कोस्टर राइड में हम भगवान को बोलते हैं कि भगवान बिल्कुल मत देना रोलर कोस्टर राइड, लेट लाइफ गो ऑन स्मूथ. ऐसा एकदम नॉर्मल होना चाहिए, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं चाहिए, एकदम मस्क की रोड होनी चाहिए. बट दैट्स नॉट द वे लाइफ इज. लाइफ इज द वे लाइफ इज. चलिए, तो आज की भी कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं. लेट मी स्टार्ट विद दैट. एंड the first success story is I was invited to for the poster launch of this movie called Aliyad Palyad. There's a Marathi movie coming up, and the producer is a Chrysalian, the actor is a Chrysalian. So I was called there for the poster launch, and it was nice to see children growing up. And this is Bhagyam Jain, who is the lead actor in this movie. Uski pehli movie hai. A nice young boy, and I've known him for the last many years. I've seen him grown up from school days to now. He entering into a professional world of cinema and acting. And of course, his father has been my student for last many years, doing great in business, and that's why he could produce a movie. So it was nice to see. ऐसा होता है ना एक कि आपने बच्चों को बड़े होते हुए देखा और आपने देखा कि they have found an expression ground, and they have now opened their wings to fly and do what they love doing, or what they feel they are good at. And I'm so blessed to have to see and witness so many stories. So that's one success story. The next success story is again another Chrysalian, Rohan. We met a few days back, and he says, "Sir, मुझे आपको मिलना था सुबह से, and आपसे आपकी blessings लेनी थी, because his company touched the 3-digit mark for the first time. So they crossed 100 crores, and he says that the moment we crossed 100 crores in the office, I just wanted to come to you and seek your blessing that we have achieved, we have touched this milestone of ours." And we had a good time talking about it and celebrating. So congratulations to Harnex and the entire team for reaching this 3-digit mark. And one more thing which he said, कि सर अभी मैं इसके आगे 200 कर लूंगा, 500 कर लूंगा, 1000 कर लूंगा, but जो पहला ये जो मजा है ना 100 का, that would not be there. So I just wanted this to be memorable, and that's why I wanted to meet you and seek your blessings. I said, wow, this made it all the more so wonderful for me also, that this milestone has been achieved. So congratulations to you, Rohan. Another success story is another Chrysalian. I was there with the entire organization a day back, and I remember when I started my interventions with them some months back, and in the previous year, and
we set up a goal कि हम ये target पे जाएंगे. तो yesterday they said we have almost reached the target. The target was 175 crores. So they were at 100 odd crores in the last year, March ending last year. And then they said a very ambitious target that we'll go to 175 crores. And yesterday when we met and we were there, they said we have touched 160. The last 15 days of this month, we are going to cross 15 crores. Team जो है is mad. We are gung ho. We are looking forward to it. कैसा भी करके हम 175 तक पहुंचेंगे. And I could see that the junoon, I could see the madness in the eyes of all over there, that they were so gung ho, they were so very positive about touching this milestone. And it's so amazing ना कि आप organizations को ऐसे देखते हो where together as a unit, together as a team, they are all ready to go for higher performances and higher targets. So congratulations to Acme. Another success story is it's a sharing. Rachna, she has been coming out. She has got podcast lined up, and the last few weeks, उनके podcast आए हैं, and she has been interviewing. She has been talking to women entrepreneurs, और एक से एक बढ़िया podcast निकले, where you should watch the podcast, video cast or podcast, क्या बोलते हैं उनको? You can see them on YouTube. And क्या जबरदस्त, when you listen to the entire interview, there is so many wonderful takeaways जो आप लेके जा सकते हो. So all women entrepreneurs, the way they have come up, the way they have pushed themselves to reach to a level where they are right now, इतनी बढ़िया stories हैं उनके life की, from their personal lives to the childhood to the family, and Rachna has been able to bring those beautiful stories out. So this is another offering from Chrysalis and from Rachna. She's come out with awesome stuff there. So do take out time to watch it on YouTube. And this is not a success story, but this is a sharing. This is from Adesh Bansal from Bhilai. He says, "Sir, last HM was my favorite. Your YouTube caption was how to make more money. I thought कोई shortcut होगा पैसे कमाने का. And initially I was restless कि आप बता क्यों नहीं रहे कि पैसा कैसे कमाऊं. आप कहना क्या चाहते हो? वो 3 Idiots वाला डायलॉग मेरे मन में आ रहा था. But later I realized that as a second gen entrepreneur, and more so in FMCG trading business, I am not adding any value to my customers. So how will I make more money? I'm just transferring products from A to B, and that's it. But I realized after last Happy Minds that I should add value. तो मैं सिर्फ क्रेडिट फैसिलिटी देता हूँ, वो भी मजबूरी में, बट दैट्स व्हाट आई डू. सो थैंक यू फॉर द क्लैरिटी. आई विल लुक फॉरवर्ड टू एडिंग वैल्यू. तो ऐसा उन्होंने अभी ये आदेश ने मैसेज किया. एंड थैंक यू आदेश फॉर दैट लवली नोट. यस, आई if I were to look back at the last Happy Minds, that's what I had spoken about it. और आप लोगों को भी याद होगा कि मैं लास्ट हैप्पी माइंड्स में बोला था कि you have to understand the economics, how economics happens. So what you bring to the marketplace, what value do you add when you come to the marketplace? That's what you will be paid for. And marketplace will not pay you for your time. Marketplace will pay you for what you bring in the time to the marketplace. So if you need more money, you need to bring more to the marketplace. So if you want a higher salary, तो आपका मार्केट आपकी कंपनी है, तो आप अपने कंपनी में रोज जाते हो, अपने मार्केट में आपका बाजार है वो, और आप वहां जाते हो बेचने के लिए. सो यू गो टू दैट बाजार टू सेल योर सर्विसेज. तो क्वेश्चन ये है कि पिछले 6 महीने, पिछले 1 साल में जब आप अपने बाजार में जाते हो और आप कहते हो कि मैं आ गया हूं, बाजार में आ गया हूं, चलो मेरे से माल खरीदो. सो यू आर ऑफरिंग योर सर्विसेज, वेदर यू आर अ सेल्स पर्सन, चाहे आप अकाउंट्स के बंदे हो, चाहे आप प्रोडक्शन में हो, चाहे आप रिसेप्शन में देख रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो अपने ऑफिस के अंदर, तो आप उस बाजार में गए हो और अपने ऑफरिंग दे रहे हो, अपनी सर्विसेज दे रहे हो. तो पूछो अपने आप को कि पिछले 6 महीने में क्या आपकी ऑफरिंग में कुछ बदलाव आया है क्या? पिछले साल भर में आपके पास कुछ नया देने को आया क्या? कि आप वो बाजार में जाके वही दे रहे हो जो आपने कल दिया, जो आपने पहले दिया, जो उससे पहले दिया? तो कोई गम नहीं है अगर आप वही दे रहे हो जो आपने पहले दिया. लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? जब आपको लगता है कि जब मैं जो दे रहा हूं उसके मुझे और पैसे मिले. फिर उसके और पैसे नहीं मिलते हैं. और पैसे जब मिलते हैं जब आप कुछ एक्स्ट्रा दोगे बाजार में जाके.
So all of us, we are going to the market every day. So whether we are going as professionals, whether we are going as entrepreneurs on the field, whether we are going as students in the college, we are offering ourselves in the marketplace. So if you want more in return, whether in terms of the salary side, whether it be in terms of the money, the revenue which you make, whether in terms of the recognition, rewards you want, the question is, what is my offering? And the world is willing to pay. I shared last HM. दुनिया देने को तैयार है, बट क्या आपकी ऑफरिंग में दम है? And that's where the question should lead you to ask, where are you working hard? Where are you working hard? So are you working hard on the job, or are you working hard on yourself? So a lot of people are working hard on the job. पसीना निकाल रहे हैं जॉब में, but they are not working hard on themselves. So I think there's no rocket science to understand this, right? Somewhere you have to work hard on yourself. बहुत मेहनत करो अपने पे. All aspects of your life, work hard on yourself. So जो भी आप रोल निभा रहे हो, उस रोल में और अच्छा कैसे करो, उसमें वर्क हार्ड करो. And you will see that if you work hard on yourself, फिर जो काम आप कर रहे हो, वो काम बखूबी क्यों नहीं होगा, बढ़िया क्यों नहीं होगा? And that is what my last Happy Minds was. So अगर आपका मिस हो गया होगा तो आप जाके उसको देखना. Sir, I love the way of your tonality, little bit smile and positive words. That's great. अरे वाह, क्या बात है, तुमने सुबह सुबह मुझे खुश कर दिया संतोष. That's nice. चलो, good. And Deepa says all the best, and ठीक है, चलो, great. All the best to all of us, all Chrysalians, everybody who are in Happy Minds, and keep on giving me some great stories to share with the world. And it's so nice that and of course there are some stories which are made over a period of time. सालों साल लगते हैं for a company to go from 0 to 100 crores. सालों साल लगते हैं for a company to go from what it is to 175 odd crores. मेहनत लगती है, जान लगती है, समर्पण लगता है, अपने आप को झोंकना लगता है. सो ये तो मैं ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ जो मेरे मेंटरशिप के अंदर हैं. बट ऑल ऑफ यू whosoever is listening to me, आपके अपने अपने एरियाज हैं एक्सप्रेशन के, जो भी आप काम कर रहे हो. तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं है ये समझना या ये सुनना कि आपको खुद को झुकना पड़ता है, समर्पित करना पड़ता है, अपने आप को पूरा खत्म करना पड़ता है टू क्रिएट समथिंग फिनोमिनल. And that's what I'm talking about, that you got to work hard on yourself so much that wherever you are, the value which they are giving to you is much more. Whatever place you are in a friend circle, आपने अपने पर इतना काम किया है कि that friend circle gives you more what it was giving to you earlier compared to what it was giving to you earlier. You have worked hard on yourself so much कि आप अपने घर गए तो आपको जो घर में प्यार मिलता था, अब उससे ज्यादा प्यार मिलता है आपको, बिकॉज आपने अपने पर बहुत काम किया हो. आप ऑफिस गए तो जो आपको सैलरी मिलती थी, आपको और ज्यादा सैलरी मिलती है बिकॉज अभी आपने अपने बहुत काम किया हो. आप कस्टमर के पास जाते हो, कस्टमर इज विलिंग टू पे यू मोर बिकॉज आपने अपने ऊपर बहुत काम किया. यू कमिंग विद न्यू प्रोडक्ट्स, विद बेटर ऑफरिंग्स, विद बेटर सर्विसिंग. तो आपकी ऑफर में, आपके ऑफरिंग में इतना चेंज हुआ है, तो मार्केट आपको पैसा क्यों नहीं देगी? सो व्हाट इज मानसी सेइंग? आज ही सोचा था सैटरडे है, ऑफिस का हॉलिडे है, आज आराम करेंगे. आपको सुनकर now I'm motivated to finish my long pending task of working on my skill set, the course I wanted to take to study. अभी तुम मुझे उसके लिए गाली दो, मुझे उसके लिए प्यार करो, I would not know, but that's what happy minds are. They are all weekly shots. They kind of shake us out of our complacency if we have. They shake us out of our mediocrity if we have. Happy minds shake us out of our comfort zone if we are in that zone. Happy minds is supposed to give that shot to push you to give your best in whatever field. और इसलिए तो आए हैं इस दुनिया में, otherwise क्यों आए हैं? We are here to kind of push ourselves to give our best, right? We did not come here to save ourselves, कि हम कुछ बचा के चले जाएं. It's just like you're on a tour, you're on a travel, और आप जा रहे हो घूमने के लिए,
let's say you go to North India, you go to Northeast, you go to South India, or you go to outside of India. तो आप यूरोप गए घूमने के लिए, so आपने एक बजट बनाया, और वो बजट के हिसाब से आपने कहा यार लेट मी टेक सम मनी विद मी, तो आपने कहा चलो आई दिस हॉलिडे आई स्पेंड 50,000 रुपीज और 1 लाख रुपीज ऑन माई सेल्फ, और आप वो पैसे लेके गए। अब आपने वो बजट बनाया है ना, तो यू आर सपोज टू यूटिलाइज दैट बजट, कि आप वो उसमें खाना खाएंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे, कुछ स्पॉट्स देख लेंगे, कुछ ट्रैवल करेंगे, और वो पैसा कंज्यूम खत्म होते जाएगा, एंड देन यू विल कम बैक आफ्टर अ वीक और 10 days ऑफ योर हॉलिडे टाइम। ये तो होता है ना। लेकिन कुछ लोग जो है उस बजट में भी बचाना चाहते, they want to save, so they will skip a few things there, they will skip a few meals there, they will skip seeing a few things there, because अरे वो पैसा बचाना है। अरे जब आप बजट ही करके गए थे कि मुझे वहां वो लाख रुपए खर्च करना है या 2 लाख खर्च करना है, वॉट एवर योर बजट वॉज, तो आप उसमें बचा के क्यों आ रहे हो? In the same way, I feel that this life of ours is there, that we have come here to just get consumed fully. ये मरने तक बचा के क्या करोगे? And yesterday I was sitting with a few Chrysalians in the night. तो मेरा कल पूरा दिन का सेशन था. Then I had a meeting in the night, and then by the time we got free, it was 11:30, 12. And I said, yeah, I have a HM tomorrow morning. And then Mahendra he was there. And he said, sir, हाँ मुझे याद है when I was in Aras Samasti with you, तो 12 साढ़े 12 तक आपने सेशन लिया रात को. And this is one of the Uttarakhand sessions we had. And he says, हाँ आपने रात तक सेशन लिया, और उसके बाद हमारे साथ आपने मस्ती भी करी, एंड देन इन द मॉर्निंग यू हैड हैप्पी माइंड्स, मुझे अच्छी तरह याद है. तो फिर एंड आई सेड हाँ. तो ही हैड दैट फीलिंग ऑफ कि आप वाओ, आप सुबह एचएम भी लोगे. आई सेड तो मेरे लिए वो एक सामान्य बात थी, बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर, टू गेट कंज्यूम्ड. आई एम नॉट हियर इन दिस वर्ल्ड टू सेव समथिंग एंड गो बैक. वैसे भी वो क्रिमेशन में सब खत्म होने वाला ही है ना, और उस वर्ल्ड में काम नहीं आने वाला जो मैं सेव करके जाऊंगा. So in this world, whatever is there has to be consumed. And if you were to look back in your life, there is a series of phases we have all lived. A series of phases. So there was a childhood phase of ours. Then there was a school phase of ours. Then there was a college phase of ours. Then there was a pre work days or during the early work days of ours phase. Then the pre-marriage days were there. Then the marriage days, the early the marriage days were there. Then the childhood when you had a child, and then those days were there. ऐसा करके आप देखो आपके ऐसे phases हैं life में, and these phases will continue till you die. So one is the birth and the death, which is there, and the second is the birth and death of every phase. So there's a phase which starts and then it ends, it dies. Then another phase starts and it dies. So in this life and death, there are many lives and deaths. इस एक जन्म के अंदर, इस एक मृत्यु और जन्म के अंदर कई सारे मृत्यु जन्म है. So we take birth in some phase and we die. Then we take birth and we die. And I wanted to understand this, कि जो उस फेज में, जब वो फेज मर जाता है ना, तो हमारा चाइल्डहुड का फेज है वो मर गया. अब वो चीज जो रह गई वो मर गई, वो भी चीज खत्म होगी उसके साथ. अब हम कितना भी चाहें वो चाइल्डहुड का जो चीज है वो अब नहीं कर सकते. जो स्कूल का हमारा फेज था, उसका एक जन्म हुआ और उसकी एक मृत्यु हो गई, वो स्कूल के फेज की. अब जो हम स्कूल में कर सकते थे वो स्कूल में ही कर सकते थे. देयर इज नो वे वी कैन ट्रांसफर इट एंड डू इट नाउ. एंड द सेम गोज टू योर कॉलेज डेज. Same goes to your pre-marriage days. Same goes to your marriage, post-marriage for you days. Same goes to your जब आपका बच्चा छोटा था, early parenting days of yours. What you could do, वो फेज शुरू हुआ और वो फेज खत्म हो गया. जो उस फेज में कर सकते थे अपने बच्चे के साथ, वो अभी आप नहीं कर सकते. तो वो बचा के भी क्या करोगे जब आप कुछ नहीं कर सकते उसका. So this age of yours, whatever age you are in, so you're in 20s or 30s or 40s or 50s, whatever your age is, ये फेज है, ये फेज की का अंत होने वाला है, इसकी मृत्यु होने वाली है इस फेज की, और इसमें बचा के आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. It has to be consumed in this phase only, and that is why I'm saying आपको समर्पित होना पड़ेगा, अपने आप को खोना पड़ेगा.
और उसके लिए चाहे आप उसको कंफर्ट से बाहर निकलो, अपने कॉम्प्लेसेंसी से बाहर निकलो, एंड दैट्स व्हाट द इंटेंट ऑफ हैप्पी माइंड्स इज, कि मैं आपको झंझोरूं, आपको जागृत करूं, आपको बताऊं कि यार ये फेज निकल जाएगा, और आप चाहकर भी इस फेज में जो करने वाले थे, अगर आपने नहीं करा, आप नेक्स्ट फेज में नहीं कर पाओ, नहीं कर पाओ। सो लव यू मानसी फॉर शेयरिंग दिस, एंड अब मैं क्या करूं, मैं हूं ऐसा कि आप लोगों को चैन से बैठने नहीं देता हूं, तो मैं क्या करूं। सो this is okay, the link of the podcast has also been given, so you can also watch there. Hmm. What is Ushali saying? Ushali saying, sir, I've seen one of these podcasts. It's really amazing. Oh, great. Thank you. I'm sure Rachna is going to be happy listening to this. And yes, we'd be spread it out to as many people as possible. Let the world see, especially the women's side, and more so the women's side of Jinka interviews. They are all in an age group where they have gone through a lot. They never uh, realized that they could do so much. When I was talking about one of the podcast is on Anju Bansal, and I know her since last 22 years, and how she came to the city of Pune as a mother, and at an age where mothers, when you are in your 40s, तो आप क्या, आपका बच्चा बड़ा हो गया, आप उनको सिर्फ बच्चे को संभालने के लिए आप सोचते हो कि मैं, मेरी जिंदगी वही है, तो एंड दैट्स व्हाट हर लाइफ वाज, of taking care of the family, of her children, and she came to Pune to support her son, who was looking out to finding his professional footing in Pune. And then accidentally we met, and she became a part of my life 360. और वो 22 साल पहले की बात है, उन्होंने वो प्रोग्राम किया मेरा 22 साल पहले, और हमारा रिश्ता आज भी ऐसा एक एक पारिवारिक रिश्ता है उनके साथ। एंड आई हैव सीन हर from a homemaker, she becoming an entrepreneur. I've seen her from an entrepreneur to she becoming a global entrepreneur, where she was traveling from Pune to Hong Kong to US, and doing business globally, and doing business of worth million of dollars. तो कहाँ एक एक गृहिणी जो एक सिर्फ अपने बच्चे को देखने परवरिश करने के लिए आई, फ्रॉम देयर शी बिकेम अ सीरियल एंटरप्रेन्योर and adventurer. She has been with me on the Guinness Book of World Record. She has been with me on the Limca Book of World Record on skydiving. And कोई भी एक कोई काम होता है, एडवेंचर की बात होती है, there she is, and she's young, 60, you know, uh, I think, well, I should not tell her age, but she's the youngest we have in our fraternity. But if you meet her, so even the most youngest persons physically, उनको मात दे देंगे अपनी एनर्जी लेवल। तो ये ऐसे ऐसे जबरदस्त लोग, ऐसे इंसान मेरी जिंदगी में आए, एंड सो दीज आर वंडरफुल स्टोरीज, एंड आई फील ब्लेस्ड दैट इनकी स्टोरीज को हम अभी कैप्चर कर पा रहे हैं और दुनिया तक पहुंचा पा रहे हैं, बिकॉज ये स्टोरी शायद दुनिया ना सुने, because they are not we are not the Ambanis and the big guys whose stories कि उसके शादी में कितने लोग आए, क्या हुआ, so we'll make our own noise because we feel we have done phenomenally well. So that's how it is. Anji, so what is the takeaway so far for all of you? चलो मुझे बताओ, आपका सबका एक एक टेकअवे क्या रहा है अभी तक, आपने जो जो मैंने बात करी है। Even on the YouTube, you can type in, and my team will share that with me. चलो टाइप करो, बताओ मुझे, what has been your takeaway? Keep adding value. Hmm. Hmm. Yes, Naresh. खुश रहो. Okay. खुद को निचोड़ लो. आई शाबाश. This is nice. खुद को नहीं निचोड़ोगे, दुनिया तो निचोड़ेगी, फिर मजा नहीं आएगा तुम्हें. So खुद को निचोड़ लो. Absolutely. Every day you kind of ऐसा कर squeeze yourself. बचा के भी क्या करोगे यार? किसके लिए बचाओगे? और वो बचा के भी कहीं काम नहीं आने वाला है. नहीं, अभी एचएम नहीं खत्म हुआ. शर्बुल, थैंक यू सो मच. अभी एचएम इज स्टिल ऑन. आई एम जस्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन. आज का अभी तक का टेक अवे क्या है? तो क्या मंगेश क्या बोल रहा है? टू गेट मोर, पुट मोर. एब्सोल्युटली. आई फील वेरी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट अबाउट आफ्टर हियरिंग दिस स्पीच. शरद, एक और करेक्शन करूंगा. दिस इज नॉट अ स्पीच.
ये शेयरिंग है. हैप्पी माइंड इज ऑल अबाउट शेयरिंग. स्पीच और शेयरिंग में हल्का फर्क होता है. शेयरिंग कम्स फ्रॉम हियर, स्पीच कम्स फ्रॉम हियर. तो मुझे तो स्पीच देनी आती नहीं यार. आई एम एन एब्सोल्युटली गॉन केस व्हेन इट कम्स टू स्पीचेस. मुझे स्पीच देनी नहीं आती. आई शेयर, आई स्पीक फ्रॉम हियर. दिल से बात करता हूँ. So I think that's what it has been. That's how it has been over the last almost 30 years. This phase will not come back. Let's enjoy, live it. Let's enjoy, let's live it, let's give it our best. This phase will not come. Give your best. Need to work hard on oneself. Yes, keep it. YOLO. YOLO क्या है ये? क्या क्या बोलते हैं YOLO को? मैं मेरे मिस हो गया. ये लाइफ क्या है? लिव, यू ओनली लिव वंस, ऐसा कुछ चक्कर है ना वो. रेट्रोस्पेक्ट एवरी डे. आज ही जियो, आज ही मरो, कल वापस आज का दिन नहीं आएगा. हाँ. आज ही जियो, आज ही मरो. ये नहीं, मरना नहीं है. मर तो तुम ऐसे आज ही भी खत्म हो जाएगा. तुम्हें मरने के लिए कुछ नहीं करना है. वो तो तुम मर ही जाओगे. जीने के लिए बहुत कुछ करना है. तो आज ही जियो, आज ही मरो नहीं. आज 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 जी लो. आज अपने आप को जितना डाल सकते हो, खपा सकते हो, खपा लो. एंड आई वांट टू यू टू अंडरस्टैंड दिस. The entire world around us, the entire creation of the world around us is such कि वो हमें जीने से रोक रही है. अनजाने में हो रहा है. वो हमें अपने आप को समर्पित करने से, अपने आप को झोंकने से रोक रही है. It is engaging us in silly things. It is engaging us in meaningless things. It is engaging us in a way which is making our life very less productive, or it is making our lives very unproductive. चाहे वो सोशल मीडिया हो आपका, चाहे वो आपके जितने भी कम्युनिकेशन के चैनल्स हो रहे हो, आप देखो कि आपके आसपास जितना भी क्रिएशन हो रहा है, इट इज समवेयर पुटिंग यू इनटू अ ट्रैप ऑफ यू लिविंग अ मीनिंगलेस लाइफ एंड जस्ट गोइंग अवे. ये हो रहा है. इसलिए अभी बहुत ज्यादा जरूरत है टू बी कॉन्शियस, टू बी अवेयर दैट ये जो आज का समय मेरे पास है, ये कल नहीं आएगा. और ये समय तो मरने वाला ही है. ये दिन तो मरने वाला ही है. कम से कम इस दिन को जो मरने वाला ही है, मैं तो कम से कम जी लूं ढंग से. दैट इज द अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस व्हिच वी हैव टू हैव. हाँ जी, और क्या लिखा है? लाइफ इज अ सिन कर्व. शाबाश, बहुत भयंकर डायलॉग है. पहले खुद को भरो, फिर लोगों को सेवा करो. वर्क ऑन योरसेल्फ. ठीक है, बी पॉजिटिव. झकास ऑन शनिवार. पुट मोर टू गेट मोर. काम करो. लाइफ इज सुख एंड दुख. ठीक है. यस विवेक, थैंक्स फॉर दैट. सेलिब्रेट एवरी डे. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. ओहो, पिक्चर. एंजॉय लाइफ. ठीक है. ओके, गुड. You all have some takeaways. Let's go into the leadership side a bit. जितना प्रेशर लीडरशिप पे आज है, या जो लोग लीडरशिप पोजीशन पे हैं, जितना प्रेशर आज उनके ऊपर है, उतना कभी हिस्ट्री में नहीं था. Every day the scenario is such that the pressure, the environment, the situation is making leadership or the execution of leadership very difficult. In a simple way, it is just like कि किसी ने स्टोव में पैन रखा है और उसमें पानी उबल रहा है, और वो गैस ऑन करके छोड़ दिया है, तो पानी उबले जा रहा है. दैट्स व्हाट लीडरशिप इज. कि वो हीट ऑन है. द हीट इज ऑन द लीडरशिप. लीडरशिप मतलब जो भी इंसान एक लीडर के माफी जीने की सोच रहा है, उसके लिए हीट ऑन है. उसके ऊपर डिमांड दिन बर दिन बढ़ती जा रही है. उस पर प्रेशर, उसकी जिम्मेदारियां और उससे एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ती जा रही है. अब ये सिचुएशन है, और ये सिचुएशन थमेगी नहीं, कम नहीं होगी. This will keep on increasing. So whether you are as leaders, maybe your parents, as the parents भी leaders ही हैं अपने घर में, तो पेरेंटिंग पे इतना डिमांड बढ़ रहा है कि the way they should parent, the way they should take care of the children, the way they should communicate with the children, the way they should feed their children, क्या खाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, बच्चों ने कैसा
होना चाहिए, बच्चों से क्या कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपने किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो और दुनिया भर में कुछ ना कुछ नया निकल रहा है। अभी आप रिलैक्स होते हो कि यार मेरा परवरिश मेरे बच्चों का ठीक चल रहा है, तो आपके पड़ोसी कुछ ना कुछ वो करके आएगा, देखो मैं बच्चों के साथ ऐसा कर रहा हूँ, उसको देख के आपको लोड हो जाएगा, हाय अभी ये करना भी बाकी रह गया है। फिर कोई और आप कहीं देख लोगे, किसी का वीडियो देख लोगे कि वो अपने बच्चों के साथ क्या कर रहा है। तो आपके ऊपर इतना लोड है एज अ पेरेंट कि आपको लगेगा आप कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, राइट और नॉट? बिकॉज देयर इज सो मच हैपनिंग इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, पहले भी होता था, but that news of so much happening in the world would not come to you. But now that video comes to you, that news comes to you, your neighbor will make it known to you, and you will feel that, "Yaar, am I treating my children well or not? Am I taking care of my children well or not?" So I'm just giving an example कि ये pressure है और ये बढ़ते रहेगा. Same is the case with other situations. You're in office, if you're in leadership position, you will be under a lot of pressure. Same is the case in the market if you are supplying products as a company under a lot of pressure. So it is just like किसी ने गैस ऑन रख दी है और पानी उबलते जा रहा है, उबलते जा रहा है, उबलते जा रहा है, कोई गैस बंद नहीं कर रहा है। एंड आई वांट टू टेल यू, ये गैस बंद नहीं होगी, ये हीट बंद नहीं होगी। हम कितने भी चाहत रख लें, कितना भी सोच लें, यार कोई तो आके इसको बर्नर को बंद कर दे, ये दुनिया है, ये बर्नर चालू ही रहेगा। और जब चालू ही रहेगा तो इसमें उबलना तो हमारा निश्चित है। तो फिर एज लीडर्स हमारा एक जिम्मेदारी बनती है कि वी काइंड ऑफ ब्रेस आवरसेल्व्स, वी काइंड ऑफ प्रिपेयर आवरसेल्व्स इन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। हमारे पास ऑप्शन नहीं है सिवाय अपने आप को तैयार करने के, बिकॉज दैट्स द सिचुएशन ऑफ लीडरशिप टुडे। तो मेरा ये प्रयास रहता है आप लोगों के साथ कि मेक यू मोर केपेबल, आपको और सक्षम करूं कि आप अपने अपने एरियाज की जो आपकी चुनौतियां हैं, जो आपके सिचुएशंस हैं, आप उसको अच्छे ढंग से हैंडल कर पाए। एंड so that's why I feel that you should share a lot, you should ask questions, because this heat is not going to stop. Hmm? बालू ने कितना बड़ा ये क्या लिखा है, बालू क्या पढ़ूं मैं इसमें? So you have any question you would like to ask me? You have any question you like to ask me on how do you handle this heat? And I don't know. I'm just sharing this with you. So on leadership side, मैं आपको मैंने बताया सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ऐसी है, आप कोई भी लीडरशिप रोल में हो, चाहे आप बड़े भाई के रूप में हो, आप पेरेंट के रूप में हो, चाहे आप कंपनी में एक रोल निभा रहे हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, आप पे हीट, ये जो है बर्नर का हीट बढ़ते जाएगा, ये कम नहीं होगा, पानी उबलते जाएगा। सो हाउ डू यू हैंडल दिस? तो आपके पास कुछ सवाल है जो आपको मुझसे पूछने ऑन द लीडरशिप साइड, ऑन दिस? सो हाउ डू आई स्टे काम एंड अवे फ्रॉम एंजाइटी इन सच heaty situations? Okay, how do I stay calm? And I think this is one of the most important things for a person. One of the most important thing a person can do is to stay calm in such demanding, anxious, anxiety creating situations. एक calm रहना, composed रहना एक बहुत जरूरी है। There are various ways by which we can stay calm and composed, but let me share with you a few. But before I share a few, I have a question for all of you. What takes away our composure, or what brings in anxiety in our lives? What brings in anxiety? So situation demanding है, and उस demanding situation में हम हैं, so suddenly we feel under a lot of pressure, and we lose our cool, we lose our calmness, we become jittery, we become anxious. तो एंजाइटी आपकी कब होती है? आप अपना कामनेस कब खोलते हैं? जब आपको खुद पे से ऐसा विश्वास होना कम हो जाता है, आपको खुद को डाउट होना चालू होता है कि यार क्या ये सिचुएशन को मैं संभाल पाऊंगी, क्या ये सिचुएशन को मैं हैंडल कर पाऊंगा? जब आपके अंदर एक सेल्फ डाउट का एक सिचुएशन आता है, तो आप अपना अंदर एंजाइटी क्रिएट करना चालू करते हैं।
You go back to your school days कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ और एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो I get, why would I get anxious? Is because this doubt in my mind, will the paper go well or not? Will I be able to answer the questions there or not? Will I pass or not? So I have these moments of self-doubt, and those moments of self-doubt will take away my composure. I will not be calm. I'll be jittery. So this is where we are creating that anxiety within us. और anxiety का source क्या है? We are seeing situations around us which are demanding. तो सबसे पहला तरीका ये है to stay cool and calm. You got to prepare yourself for the situation, and the more you are prepared, the more your confidence will be high. The more you are prepared, the more the confidence will be high. So for any situation which you're entering into which is demanding for you, you got to prepare yourself. And आप पूछोगे कितना prepare करूं? I wish I had an answer for that. The situation is जितना करो उतना कम है. But of course you can't just go on preparing. But as much as you can, you be prepared. The second part is more important than preparation. The first is preparation. Second part is you believing in your preparation. So you got to keep on kind of cementing this fact that what you're prepared is good enough. What you're prepared will work. What you're prepared will help you take care of the situation. So you got to have these affirmations in your mind that what I've prepared is going to work. And what I'm doing is really good. The way I'm taking care of my children is really good. This is, you got to reconfirm to yourself again and again. Because बहुत बार हम prepare करते हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता कि हमारी preparation सही है, it will say make us sail through or not. As a result, हम अपनी preparation को कच्चा कर देते हैं, weak कर देते हैं. So पहला तो है, you cannot escape from preparation. So if you want to see the chronology, I did not say कि believe करो हो जाएगा पहले. I said पहले prepare करो, पहले मेहनत करो. And then from there I said, now once you have prepared, you have worked on yourself, now believe कि जो मैंने prepare किया है, जो मैंने तैयार किया है, ये काम करे. Talk to yourself. Oh, this will work. This will work. This will work. Right. And third thing which you can do, now I'm giving you in shortcuts, but third thing you can do is, and I'm sure Mansi, you must be doing it, but now do it with this clarity. Sit on the seat of meditation. Every day, do meditation. All of you, I'm sharing this. You do meditation. Meditation will kind of relax this. The सबसे simplest, सबसे बोलते हैं कि सबसे तुच्छ फायदा, सबसे low level का फायदा आपको ये होगा कि when you meditate, you will be cool, calm, and composed. I have not seen anybody coming out more jittery than what he or she was after meditation. आप कितने भी jittery हो, कितने भी आप anxiety में हो, when you sit for meditation, your level of anxiety and your jitteriness, it comes down. आप थोड़े calm and composed होके ही निकलते हो बाहर. और सबसे तुच्छ लेवल का ये बेनिफिट है. मेडिटेशन के बेनिफिट्स बहुत हैं, बट ये तो मिनिमम होता ही होता है. सो एवरीबॉडी शुड सिट फॉर 5-10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स एवरी डे फॉर मेडिटेशन. एंड उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? बिकॉज when you close your eyes and you sit for meditation, so you have stopped taking any inputs. तो आपका बाहर का इनपुट होना बंद हो गया है. और जब इनपुट होना बंद हो गया है बाहर का, तो जो अंदर हलचल चल रही है बस वही चल रही है. तो धीरे धीरे वो हलचल होना जो है ना, वो कम होना चलती है, बिकॉज आपने उसको सारे द्वार बंद कर दिए इनपुट. एंड देन टाइम कम्स, वो हलचल भी कहती है अच्छा ठीक है ना, अभी कितना हलचल, वो शांत 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 शांत. बिकॉज मेडिटेशन का जो प्रोसेस होता है, व्हेन पीपल आस्क मी हाउ डू आई स्टार्ट मेडिटेशन, सो आई से द बेसिक इज यू जस्ट थिंक ऑफ वन थिंग. कोई भी चीज हो सकती है. इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट विच यू सी, इट कैन बी वन इंसिडेंट विच यू हैव इन माइंड, बट यू जस्ट थिंक ऑफ वन थिंग एंड स्टे देयर. तो आपने कहा, आंखें बंद करने से पहले आपने कहा चलो ये तांबे का मेरे पास कंटेनर है. बस यू क्लोज योर आईज एंड यू थिंक ऑफ दिस तांबे का कंटेनर.
सो आप क्या कर रहे हो, आपने अपने माइंड को इनपुट देना बंद कर दिया, नंबर वन। नंबर टू, आपके मन में जो हलचल चल रही है, आपने कहा उसको छोड़ो यार, ये कंटेनर सोचो, कंटेनर क्या कर रहा है, कंटेनर लाओ। वापस हलचल हो रही है, वापस अब कंटेनर पे आए, वापस हलचल हो रही है, वापस कंटेनर पे आए। तो क्या होगा, आप जब आपका माइंड जा रहा है कहीं बाहर, with your eyes closed also, but you're bringing it back to the container. Again, it's going out for a round. Again, you bring it back to the container. Again, it's going back. You bring it back to the container. और एक समय आएगा जब कंटेनर की जीत हो जाएगी और माइंड भटकना बंद कर देगा, then you're able to focus on one thing. This means आप जहां फोकस करना चाहते हो वहीं फोकस कर रहे हो। इसका मतलब माइंड अभी आपके कंट्रोल में आ रहा है। अगर मैं आपको अभी बोलूं ना, अपनी माइंड, आप आंखें बंद करो और जस्ट बी कॉन्शियस कि आपके मन में क्या चल रहा है, और उसके बाद इमीडिएटली आंख खोलो और लिखो आपके मन में क्या चल रहा है। यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज कि आप क्या क्या सोच रहे थे, ईरान दुरान क्या क्या चल रहा होगा आपके मन में। अगर इफ देयर इज अ डिवाइस टू कैप्चर व्हाट्स हैपनिंग इन योर माइंड, यू विल गो मैड रीडिंग दैट। और वो इसलिए है क्योंकि आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, और इसलिए कंट्रोल में नहीं है क्योंकि आपने कंट्रोल करने के लिए कुछ सीखा नहीं, कुछ प्रैक्टिस नहीं किया। सो द बेसिक बिगिनिंग ऑफ मेडिटेशन इज दैट यू काइंड ऑफ कंट्रोल योर माइंड एंड यू से मैं वही सोचूंगा जो मैं सोचना चाहता हूं, एंड दैट विल काइंड ऑफ मेक यू, बिकॉज बहुत सारे विचारों पे फोकस से अच्छा आपने एक विचार पे फोकस किया, इट काम्स योर माइंड, एंड यू कैन ऐड इन सम गुड म्यूजिक टू हेल्प यू एंड थिंग्स लाइक दैट। वो सब है। सो in short, Mansi, this is what I have my suggestion for you. Prepare to reduce your anxiety because the heat is on. आप सिर्फ प्रिपेयर कर सकते हो, कितना प्रिपेयर कर सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है, बट प्रिपेयर। एंड सेकेंड इज यू बिलीव इन द प्रिपरेशन ऑफ योर्स, दैट इज अ मस्ट, दैट्स अ मस्ट। When as leaders our subordinates don't support us or work accordingly, क्या करें जब as leaders, when as leaders our subordinates don't support us or they don't work the way we want them to work, तो क्या करें। घर गए और आपने अपने बच्चे को बोला गो एंड गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और वो अभी भी अपने कंप्यूटर में गेम खेल रहा है। आपने किसी को बोला इधर आ और वो उधर जाता है, तो क्या करें। तो सबसे पहले जो है ना, उसको कोसना बंद करें, सुनता नहीं है मेरी, दिस सबऑर्डिनेट डजंट लिसन टू मी, माय चाइल्ड डजंट लिसन टू मी, बिल्कुल बदतमीज हो गए हैं, कुछ इज्जत नहीं रह गई है। पहले तो वो करना बंद करें। दूसरा ये समझना शुरू करें कि शायद उसको ये लैंग्वेज हिट नहीं होती, शायद उसको ये स्टाइल आपका हिट नहीं होता, शायद उसको उसके स्टाइल से बुलाना पड़ेगा, शायद आपको अभी उससे काम करवाने के लिए किस ढंग से, किस अंदाज से आपको डील करना पड़ेगा या बात करनी पड़ेगी, वो आपको सीखना पड़ेगा। सो व्हेन योर सबऑर्डिनेट्स डोंट listen to you, don't do the work, the way you want them to do, this is a simple leadership issue in terms of handling people. तो आपको समझना पड़ेगा कि जिस ढंग से आप आज तक हैंडल करते आ रहे हो वो ढंग से अभी लोग हैंडल नहीं होंगे, because people have changed, people have evolved, people have got their own ways of working and their own thought process around it. So you have to go back to the drawing board and or you have to go back to the learning phase again and learn about handling people, learn about getting worked out of people, learn about the best ways to make people be motivated to do the work the way you want them to do. You have to work around, what foundations to put in the in your life where they will look up to you, and आपका हर एक शब्द जो है they will hold to that word of yours because they look up to you. And I've seen this happening when people don't respond, when people don't respond to your initiative of getting work from them. This means somewhere in their eyes, the value of the leader has reduced.
कि एक बच्चे की नजरों में अगर माँ बाप की वैल्यू कम हो जाती है तो वो माँ बाप की बात मानना बंद करता है या उनकी इज्जत करना कम करता है. सेम गोes टू द ऑफिस. That why would somebody not listen to your directions? Somewhere in why would somebody not produce work the way you want them to produce? Because somewhere जिस ढंग से आप कहना चाह रहे हो वो काम हो, उसकी वैल्यू उसके मन में नहीं है. समवेयर एज अ लीडर आपकी वैल्यू उसके मन में नहीं, तो आपको अपनी वैल्यू उसके मन में बढ़ानी पड़ेगी. That's one of the strongest and the best ways. So how do you get the work done out of people? They should look up to you. And why will they look up to you? Because you have lived your life and you're living your life in such a powerful way. They feel that this person knows. This person knows. And if they have this feeling that this person knows, they will look up to you. They will listen to you. Why great people are cursed? Last question for the day. अरे बाप रे 8-10 हो गया. Why great people are cursed in beginning, then they get copied later on. क्यों अटल बिहारी वाजपेयी जी को कर्ज किया गया जब वो प्रधानमंत्री थे, और आज जब वो नहीं है तो क्यों उनको उनको माना जाता है, पूजा जाता है? ऐसा क्यों है? ये चलो नेक्स्ट उसमें बात करेंगे. ठीक है. व्हाई दिस हैपेंस बिकॉज व्हेन दे आर लिविंग देयर लाइव्स, they are asking, they're demanding certain behavior from people around them. They're demanding certain kind of they have an expectation of a certain output from people around them. और जब वो लीडर होता है तो फिर वो डिमांड करता है तो फिर लोगों को अच्छा नहीं लगता. लेकिन जब वो लीडर चले जाता है तो पीछे मुड़ के वो देखते हैं और कहते हैं यार इनके राज्य में, इनके कार्यकाल में, इनकी लीडरशिप के अंदर इनके साथ काम करके हम अच्छे बन गए, बड़े बन गए. एंड देन दे स्टार्ट लुकिंग अप टू दिस गाइस. बिकॉज जब सामने होता है तो सामने वो काम करवाता है, और काम करवाते समय हमें फिर वो इंसान अच्छा नहीं लगता है. सो दैट्स वन ऑफ द आंसर्स, बट देन वी कैन टेक द सब्जेक्ट डीपर लेटर ऑन. सो आज का विराम करते हैं आपके एचएम में. And but yes, lovely interacting with you on another simple beautiful aspect of life. But taking back from here this HM, there are so many things which we can take back. But मेरा आपसे ये कहना रहेगा, let's make our lives much more powerful. The heat is on. तो एक गाना है, The heat is on. तो हम सब बर्नर पे बैठे हुए हैं और बर्नर बंद नहीं होने वाला है. हमसे डिमांड जो है वो बंद नहीं होने वाली है. बहुत सर, बहुत स्मार्ट हैंडसम हो और दिख भी रहे हो. अरे वाह, क्या बात है, खुश कर देता है ऋषि. आई लव यू. चलो आज का एचएम यही विराम लेते हैं. वन कीबोर्ड फॉर लीडरशिप एंड लाइफ कोच मस्ट हैव. प्लीज सजेस्ट वन कीबोर्ड. कीबोर्ड क्या होता है? चलो ऋषि. हाँ चलो. गॉड ब्लेस यू ऑल. आई विल सी यू नेक्स्ट एचएम. लव यू नवनाथ, राकेश, ऋषि.